हम चाहते हैं कि सबका पब्लिक स्टूडेंट कोलेज में हो। मैं आज आ चुका हूँ TU Berlin. Today is the exam of Aufnahme Prüfung. Today is 25th August for 2023 September intake. Many of our students are writing the Aufnahme exam today. Who is from Ahmedabad and he is from Delhi. So guys are getting late. Today is the exam. So we'll wish all the best. All the best. All the best, Divyan. One of our student, Mr. Divyan Bhardwaj, he has cracked 2 Aufnahme already, but he has ditched to the 2 universities because his main focus was TU Berlin. 100% ratio for the students of Amritpal Vision when it comes for cracking the exams of Aufnahme Prüfung. We will be here with you, standing with you when it comes to, giving the best services to study in Germany or living here in Germany. We will be also meeting them now. They will be here with us shortly. So guys, Adit will let you know about German exam and Divyan will let you know about maths exam. Hello everyone, this is Amritpal, founder of Amritpal Vision. Today I am here in TU Berlin and today is the exam of Aufnahme Prüfung. Today is 25th August. Aufnahme Prüfung for 2023 September intake. So many of our students are writing the Aufnahme exam today. So today I have 2 students, Divyan and Adit Patel, who is from Ahmedabad and he is from Delhi. He is our student, already cracked 2 exams. Which are they? So TU Darmstadt and University Halle. So he has already cleared the Aufnahme Prüfungs of Halle and Darmstadt, but he is here in Berlin and he has told me that, sir, I don't want to go in those 2 universities, but I'm going here in TU Berlin. So he is again here in TU Berlin to give the Aufnahme exam, and he is Adit. He will be also giving the Aufnahme exams of TU Berlin, KIT, Hanover and Munich and Chemnitz. So we will be giving you all the updates related to student college exams and Aufnahme Prüfung. So always be in touch with Amritpal Vision and we'll give you the latest updates related to studying in Germany. So guys are getting late. Today is the exam. So we'll wish all the best. All the best. All the best, Divyan. We will be also meeting them now. They will be here with us shortly, and after the exam we will be taking their interview कि TU Berlin का एग्ज़ाम कैसा था, कैसा होता है। और एक हमारे जो स्टूडेंट है दिव्यान भारद्वाज, दिल्ली से हैं, उन्होंने 2 Aufnahme ऑलरेडी क्रैक कर लिए हैं, बट उनको TU Berlin जाना था तो दोनों को छोड़ दिया, ड्रामस्टाड और हाले को, दोनों की सीट जाने दी और अभी TU Berlin में आए हैं। एंड आई एम 100% श्योर कि वो TU Berlin का एग्ज़ाम भी क्रैक करेंगे और उसके बाद TU Berlin में हम लोग उनसे मिलने भी आएंगे नेक्स्ट ईयर जब भी वो लोग बैचलर स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, माय स्टूडेंट्स जस्ट वेंट इनसाइड एग्ज़ाम्स के लिए, दे जस्ट वेंट एंड ऑन कैमरा मैं बोल रहा हूँ, मुझे पूरा भरोसा है वो एग्ज़ाम पास करेंगे। उनके साथ मिलाएंगे, उनका मैं आपको Syllabus बताऊँगा, मीन्स एडमिशन लेटर बताऊँगा, क्योंकि आई नो कि C1 करने के बाद अमृतपाल विजन के थ्रू उनका 100% यहाँ पर सिलेक्शन होना ही होना है। और एक स्टूडेंट का तो 2 यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी सिलेक्शन था, दैट इज़ ड्रामस्टाड एंड हाले, वो नहीं गया, उसको इधर ही TU Berlin में ही आना था। दिव्यान भारद्वाज दिल्ली का हमारा स्टूडेंट है। सो गाइज़, अगर आप जर्मनी जल्दी से जल्दी आना चाहते हो, बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो, पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अमृतपाल विजन। जैसे कि आपने देखा, बहुत सारे बच्चे आए थे एग्ज़ाम देने के लिए, सीट्स बहुत लिमिटेड होती हैं यहाँ पर, राइट? ऐसा नहीं है कि हज़ारों सीट्स होती है स्टूडेंट कोलेज के लिए, क्योंकि फ्री में अगर आपको पढ़ना है तो इतनी सीट्स अवेलेबल नहीं होती है, और स्टूडेंट कोलेज के लिए बहुत कम सीट्स अवेलेबल होती है। किसी में 40 होती है, किसी में 50 होती है, किसी में मैक्सिमम 60 होती है। सो गाइस, बहुत सारे जो लोग हैं ना यहाँ पर, ये देखो मेरे पीछे 2 लोग खड़े हैं और वहाँ पर वो लोग पैम्पलेट्स दे रहे हैं प्राइवेट स्टूडेंट को लेके। तो जब भी पता है इधर 1600-1700 बच्चे जब ये एग्ज़ाम्स देते हैं और सीट होती है सिर्फ 30 से 40, तो 1600-1700 बच्चों को कैसे एडमिशन मिलेगा? सो प्राइवेट स्टूडेंट को लेके के पैम्पलेट्स भी इधर बट रहे हैं, बट अमृतपाल विजन के स्टूडेंट्स को प्राइवेट में नहीं जाने की नौबत आती, क्योंकि 100% रेशियो है। आज तक स्टूडेंट कोलेज सिलेक्शन में बहुत सारे बच्चे आपने देखे होंगे रिलेटेड टू स्टूडेंट कोलेज, अपने वीडियोस देखे होंगे। हम लोग इधर आके आपके साथ में खड़े रहते हैं, जब भी आउफनामे एग्ज़ाम होता है आपके साथ में खड़े रहते हैं, सो दैट आपको मेंटल सपोर्ट रहे कि हाँ भाई हमारे साथ है, हमारे पीछे है कोई। कितने बच्चों का तो यहाँ पे एडमिशन भी नहीं आया हुआ था, रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ था, क्योंकि एग्ज़ाम
का लेटर आने के बाद रजिस्ट्रेशन करना भी ज़रूरी है। आधे बच्चों ने वो भी नहीं किया था, बट अमृतपाल विजन के बच्चों के पास सब कुछ था। आधे बच्चे APS के बिना आए थे इधर एग्ज़ाम देने के लिए, बाहर खड़े हैं वो लोग, निकाल दिया है उन लोगों को, और हमारे स्टूडेंट्स अंदर लिखेंगे एग्ज़ाम और पास होके आएंगे, दैट इज़ माई गारंटी। इतने सारे बच्चे एग्ज़ाम्स देने आते हैं पुअर गाइडेंस से, राइट। B2 करके आए हैं इंडिया से, बहुत कम बच्चों को जो इंडिया से B2 करते हैं उनको सीट्स मिलती है। उनको भी पता है इधर आके दे रहे हैं कब के प्राइवेट स्टूडेंट कॉलेज के पैम्पलेट्स, बट अमृतपाल विजन के बच्चों को ज़रूरत नहीं है उसकी, क्योंकि 100% प्लेसमेंट रेशियो है आज तक का। क्योंकि हम लोग C1 जर्मनी में करवाते हैं, राइट। C1 इधर आपका होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 100% सीट मिलेगी, ये गारंटी के साथ आपको बोलते हैं। और गारंटी के साथ एडमिशन लेते हैं अमृतपाल विजन में, कि अगर आप जर्मनी में आके C1 करते हो अमृतपाल विजन के साथ में, अमृतपाल विजन के बताए हुए स्कूल्स में, तो आपको 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। अदरवाइज़ प्राइवेट स्टूडेंट कॉलेज में आना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द डे। तो क्या फ़ायदा हुआ? जितना पैसा आपने इंडिया में लैंग्वेज करने से बचाया, उससे ज़्यादा पैसा आपको इधर प्राइवेट स्टूडेंट कॉलेज में देना पड़ेगा। सो ऑलवेज मेक द वाइज डिसीजन, बेस्ट डिसीजन लीजिए अपनी लाइफ का। ऐसा ना हो कि थोड़े से पैसे बचाने के लिए, राइट, आप प्राइवेट स्टूडेंट कॉलेज में जाओ। सो हम चाहते हैं कि सबका पब्लिक स्टूडेंट कॉलेज में हो, अमृतपाल विजन के स्टूडेंट्स का, राइट, जितने भी हमारे पास आते हैं उनका पब्लिक स्टूडेंट कॉलेज में हो। आज 2 बार एग्ज़ाम्स होने वाली है, 1:30 बजे भी है। आधे बच्चे अगर रह जाएंगे तो 1:30 बजे वो लोग एग्ज़ाम देंगे। सो गाइज ऑलवेज मेक द वाइज डिसीजन। ऐसा ना हो कि इंडिया में आप A1 A2 B1 B2 करो और इधर डायरेक्ट आ जाओ स्टूडेंट कॉलेज देने के लिए, नहीं निकलेगा 99%। मैं चाहता हूँ कि निकले, बट जनरली इतने सारे बच्चे होते हैं, इतने सारा कंपटीशन है कि आपको अपनी जो मास्टर्स जो स्किल करनी पड़ती है वो जर्मन में आपको अपनी स्किल मास्टर करनी पड़ती है। अदरवाइज अगेन बैक टू बैक जाते रहो, ट्रैवल करते रहो, अलग अलग स्टूडेंट कॉलेज में एग्ज़ाम देते रहो। सो डोंट डू दिस, make a wise decision to come to Germany, learn your language till C1 level here in Germany। जर्मनी में आके C1 करो, जर्मनी में आके Aufnahme एग्ज़ाम का प्रेपरेशन करो। अपने पास प्रेपरेशन प्रोग्राम भी है, Aufnahme प्रेप कोर्स हम लोग देते हैं 1.5 महीने का, 3 वीक्स और 3 वीक्स दोनों, और वो हम लोग आपको करवाएंगे। 3 वीक्स का जर्मन प्रेप कोर्स होगा और 3 वीक्स का मैथ्स प्रेप कोर्स होगा, और वो भी होगा सुपर इंटेंसिव कोर्स होगा, जिसके अंदर आपको पूरे इन्फॉर्मेशन देंगे कैसे एग्ज़ाम पास होती है। Hello everyone, this is Amritpal, founder of Amritpal Vision. So again, I am here with 2 of my students who have recently completed their Aufnahme Prüfung here in Germany in TU Berlin. So today we will be taking their review of giving the multiple Aufnahme exam, because I want you to know about how Aufnahme Prüfung works. क्या पूछते हैं, what you have to write in Aufnahme, what are the topics and what are the important things what you should know before coming to Germany, what you should know before giving the Aufnahme exam. So these 2 students are here who have given multiple exams. They will let you know that okay, what you have to do, what things are to be taken care of before coming to Germany, before giving the Aufnahme exam. So Divyan, who has already secured 2 places in the Aufnahmes, that is Darmstadt and Halle, but he has ditched both the student colleagues because his main focus was on TU Berlin. So he has given the exam of TU Berlin, and I am 100% sure that he will get in TU Berlin. He will get in his favorite student colleague. We will let you know about his student colleague after this video. So guys, always stay in contact with us, that is Amritpal Vision, because we are always here in Germany sitting with you while you give your Aufnahme exams. So now we will ask them about their review, about their suggestion, so that you can prepare before coming to Germany. So guys, Adit will let you know about German exam and Divyan will let you know about maths exam. So Adit, it's all up to you now. Yeah. Hello, my name is Adit Patel. I'm from Ahmedabad and I live in Koblenz. I came today specifically into TU Berlin to give my Aufnahme Prüfung. So the Aufnahme Prüfung actually consists of 2 exams, German and Maths. For German, there's a C test. So for the C test, the pattern is basically you will be given a paragraph, and in the paragraph you will be given sentences, and in the sentences
in some of the paragraphs the sentences will be incomplete, so you have to complete the sentences. And the other part, you will be given sentences, but you need to complete the words, specific words in the sentences. For that, you need to have a very nice knowledge, very deep knowledge of word charts, and also the which is vocabulary, and also the grammar in German. So my personal recommendation is you do your lower levels, which is A1 and A2 of German in India, and then you come here in Germany and you study B1, B2 and C1, because C1 is the most important level in German. So if you have a C1 language level in German, then you have a very deep knowledge of German, which means it will be very easy for you to give the Aufnahmeprüfung and score the maximum possible marks in C test. Hi guys, I'm Divyan and I'm from Delhi. Up until now, I've given 2 exams, and this was my 3rd exam, my 3rd Aufnahme test. And I have my fair bit of knowledge about the maths part of the Aufnahme test. And according to me, the maths part of the Aufnahme test is a basic test of your knowledge of maths and things which you have done up until class 10th or 11th. And it usually consists of 15 to 20 questions, sometimes even 10 questions depending on your exam. And they test your topics from algebra, trigonometry, sometimes even calculus, but just the basic parts. If you are very strong in algebra, that is the part which contains the most marks. So my personal recommendation would be to focus on the things you have done up till class 10th, and I'm pretty sure that your Aufnahme test in at least the subject of maths will be pretty good. I came to Germany through Amritpal Vision, Mr. Amritpal. He has guided me and supported me throughout it all. And my personal recommendation to students who are looking to come to Germany is that, as Adit said, people usually tend to try to do the higher levels B2 or C1 in India, but I took my higher levels in Germany, and that has helped me massively in every single aspect, from German and even maths. The basics I did in class 10th up till when I came to Germany, they have helped me till now. So if you're looking to come to Germany, Mr. Amritpal Vision, Mr. Amritpal from Amritpal Vision is my best recommendation to you. Yeah. Also in the C test, I saw many people who didn't complete their higher levels in Germany. They did in India, and they have faced a much more difficult situation in the Aufnahmeprüfung as compared to me or even Divyan, as we completed our higher levels in Germany, which was Amritpal sir's biggest and the most important recommendation, and which I would recommend you to. Till now, my journey has been very smooth, and that's the only reason for that is Mr. Amritpal sir. Like, they have supported me through all of my stages up till now, and I hope they'll support me all the way, and I know Amritpal sir will support me all the way till I get into a student college and even after the student college. So yeah, my best recommendation is consult Amritpal Vision and give your best, and yeah, just hope for the best, and I hope you come to Germany, and all the best for that. Best of luck. So guys, अगर आप जर्मनी जाना चाहते हो, Amritpal Vision should be your first and most important choice of your life if you're looking for studying here in Germany, because we will be here with you, standing with you when it comes to, you know, giving the best services to study in Germany or living here in Germany. See you soon.